इससे पहले हम रिलेटिव क्लॉज के बारे में स्टडी कर चुके हैं. सो अ रिलेटिव क्लॉज कैन बी अ रिस्ट्रिक्टिव एंड कैन बी अ नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज. सो अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज which is the one that cannot be omitted from a sentence if the sentence is to keep its original meaning. अब आप इससे पहले हम रिलेटिव क्लॉज के बारे में स्टडी कर चुके हैं. इसकी दो फर्दर बाइफिकेशंस में हैं, जिसमें एक है रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव. एज द नेम अप्लाइज, आपका जो रिलेटिव क्लॉज में रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है that cannot be omitted from the sentence construction, because if you omit that from the sentence then आपका जो original meaning है sentence की वो आपकी disturb होगी. So in order to keep the original meaning intact, आपने relative clause restrictive clause को वहीं पे intact रखते हैं. You can't really omit this. However, जो non-restrictive clause होता है it's set off from the other clauses by commas and restrictive clause is not. आप नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को बाकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कॉमा से सेपरेट रखते हैं, जबकि आपने जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है उसको उसमें आपके पास ये पंक्चुएशंस रिक्वायर्ड नहीं है इन द राइटिंग्स. एंड अगेन एज पर नेम सजेस्ट, इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस से जो टोटल मीनिंग है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके चेंज में कोई इफेक्ट नहीं आता. नाउ सिंस वी नो अबाउट द रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, हु, whom and which, जिस पे हमारी पूरी कंप्लीट लेसन सीरीज मौजूद है, इसमें आप इनको यूज़ करते हैं, इनको रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं. However, that can be only used in the restrictive clause. This word that can be only used in the restrictive clause. However, the word which is also acceptable. इन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में विच इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल. अगर आप प्रिसाइसली टोफिल के एस्पेक्ट्स में बात करें तो टोफिल में आपको टोफिल विल नॉट टेस्ट द यूज़ ऑफ विच एंड दैट इन द रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस. सो दैट्स अनदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन. बट हु, whom एंड विच को हम रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव दोनों में इस्तेमाल करते हैं. That is only in the restrictive clause, and which भी आपको है that is also acceptable in the restrictive clause. So that you should know कि आपने restrictive और non restrictive clause में किसको इस्तेमाल करना है और that को सिर्फ restrictive clause में इस्तेमाल करना है, which is also interchangeable with the which at times. इसकी acceptability है. अब हम example देख लेते हैं restrictive clauses की. A restrictive clause like weeds that float to the surface would be removed before the decay. Now this as just studied कि आपने जो that है उसको सिर्फ restrictive clause में रखेंगे, तो आपका restrictive clause में आपके पास जो that है that is very important. Why? Because we are not speaking of all the weeds, only those that float on the surface. So आपका जो that है that is actually referring to the one who float on the surface. Thus the sentence is restrictive. If the float to the surface were omitted, the sentence would have a different meaning. अगर आप इसमें weeds that float to the surface में अगर आप to the surface को आप float to the surface को आप omit कर दें तो sentence की meaning आपकी ख़त्म हो जाएगी, because we are only referring to the one who are on the surface. So that's how आप अगर आपकी sentence की writing construction देखें तो आपने इसमें कोई भी commas use नहीं किए, because restrictive clauses को आपने commas में से bifurcate या separate करने की ज़रूरत नहीं है, और जो word that है that is used only in the restrictive clause. Now look at the example of the non-restrictive clause. My car, which is very large, uses too much gasoline. So सबसे पहले तो sentence की writing construction देख लेते हैं कि जो non-restrictive clause है उसमें आपके पास which इस्तेमाल हुआ है, जिसको हमने पहले स्टडी कर लिया था कि with, which और whom हम इस्तेमाल करते हैं both restrictive and non-restrictive clause में. सेकेंड चीज़ हमने पढ़ी थी कि non-restrictive clause में हम commas से separate करते हैं from the rest of the clause. और प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये थी कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है उसको अगर आप पूरे सेंटेंस में से ओमिट भी कर लें तो आपके जो सेंटेंस की मीनिंग है वो किल नहीं होती. सो यहाँ पर है कि माई कार विच इज़ वेरी लार्ज uses too much gasoline. So the fact that my car is very large is additional information and not important to the rest of the sentence, because the important part ये कि my car uses too much gasoline. So this is additional information that it is very large. That's why it is separated with the commas. अगर आप इसको omit भी कर लें तो sentence still makes sense कि आपकी जो कार है that takes too much gasoline, regardless the size. आपकी कार ने ज़्यादा गैसोलीन लेना है. सो द नोटिस दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू यूज़ अ प्रोनाउन दैट इन प्लेस ऑफ विच इन दिस सेंटेंस. अगर आप यहाँ पे इस विच को रिप्लेस करना चाहें विद द प्रोनाउन दैट, सो द सेंटेंस विल नॉट मेक सेंस. सो यहाँ पे आपकी राइटिंग कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को कॉमा से सेपरेट करना है, इसमें विद, विच और whom को यूज़ करना है, और इसको रिस्ट्रिक्टिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं दो. और प्लस इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अगर इसको ओमिट भी कर लें तो सेंटेंस की आपकी जो मीनिंग है वो किल नहीं होगी. Few more examples regarding relative clauses. Dr. Jones is the only doctor whom I have seen about this problem.
सो अगेन यहाँ पे आपका जो है ये दैट इज़ अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, जिसमें आपके पास कोई कॉमा बाइफिकेशन सेपरेशन नहीं है, और प्लस यू हैव नॉट सीन टू एवरी डॉक्टर, सो यू आर जस्ट, अगर आप इसमें से आप इसको ओमिट कर दें तो सेंटेंस विल नॉट मेक सेंस बिकॉज यू जस्ट गॉन टू दिस गाय, टू दैट पर्टिकुलर डॉक्टर. Hurricanes that are born off the coast of Africa often prove to be the most deadly. So again, they are only talking about from the coast of from the coast of Africa. So again, this is a restrictive clause. और इसको अगर आप omit करेंगे तो sentence will not make sense because you are only referring to the most deadly ones which comes from the coast Africa. Teacher who do not spend enough time on class preparation often have difficulty explaining new lessons. So again यहाँ पर आपने refer कर रहे हैं to the teachers who have laziness in preparing their lessons. So they are the one who do not spend enough time in the preparation. उनको problem होती है अपने explain करने your difficult lessons. So again this is again your restrictive clause. इसमें आप you cannot omit because you're only referring to the teachers who have problem in their enough time preparation, जो अपना time enough नहीं spend करते in preparing their sample lessons. Now what about the non-restrictive examples? आप सबसे पहले the first class में कर लें, this is with the comma. So even if you take this sample, this clause out, the sentence makes sense. For example, this rum which I bought in the Virgin Island is very smooth. So regardless where you buy it from, you are mentioning that you bought it from Virgin Island. Even if you take this information out, it still makes sense that this rum is very smooth. Film that has been exposed to X-rays often produces poor photographs. First तो ये है कि चूँकि इसमें comma नहीं है तो it is a restrictive clause. Plus इसमें that मौजूद है, that only comes in the restrictive clause. And second ये है कि this sentence में अगर आप इसमें exposure to X-ray निकाल दें तो sentence will not make sense because not every film have poor photographs, only the ones which are exposed to the X-rays. The another example is the woman to whom we gave the check has left. So we are only referring to the one who checked the left. So the woman to whom we gave the check has left. Again, there is no comma. It is a restrictive clause because we are not giving to everyone. So the only one we gave the check has left. So since we know get which, whom और who हम use कर सकते हैं restrictive clause में भी, and this is an example of a restrictive clause where we have the lady who left after taking the chair. इससे पहले हम relative clause को और restrictive और non-restrictive को study कर चुके हैं. So let's start the lesson. Optional relative clauses reduction. Now in restricted relative clauses, it is possible to omit the relative pronoun and the verb be. हम relative pronouns में with, which और who, whom, that, which को स्टडी कर चुके हैं. सो अगर आप के लिए पॉसिबल भी होता है कि एट टाइम्स कि आप अपने रिलेटिव प्रोनाउन को और उसके बाद जो वर्ब भी है उसको ओमिट कर लें, एंड इट कैन बी एनी अदर ऑक्सिलरीज ईदर. और किन केसेस में उसको हम स्टडी करते हैं कि बिफोर द रिलेटिव क्लॉजेस इन द पैसिव वॉइस. आप पैसिव वॉइसेस में कैसे अपने इसको डिलीट करेंगे, ओमिट करेंगे. दिस इज द जी वैल्यू विच वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेबल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व. नाउ दिस इज आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, दिस इज योर वर्ब बी. सो जस्ट ओमिट दीज टू. This is a Z value obtained from the table areas under the normal curve, and yet the sentence still makes sense and no change in the meaning whatsoever. So that's how you can play with your how to omit your relative pronoun and the verb be in first condition where before the relative clauses in the passive voice. Second, before the prepositional phrase. आप prepositional phrase से पहले भी अपना relative pronoun और auxiliary को remove कर सकते हैं. The beaker that is on the counter, this is your prepositional phrase, this is your relative pronoun and this is your auxiliary verb be. So आप इसमें से that is को omit कर दें, which is the beaker on the counter contains a solution, and yet the sentence still makes sense. आपने जब relative pronoun को omit किया है और auxiliary verb को omit किया है, and the sentence still have its meaning intact. Third condition है before the progressive या continuous form of verb structures. आप अपना relative pronoun को और verb be को omit कर सकते हैं just before your continuous verb form. For example, the girls who is running down the street might be in trouble. So this is your relative pronoun followed by the verb be, and this is your progressive continuous verb form structure. So इसमें से अगर आप इस दोनों को omit कर दें, like the girls running down the street might be in trouble, so there still आपके पास option है कि आप इसको अपने relative clause को reduce करें and the sentence still makes sense और आपको इसमें कोई भी problem नहीं होगी.
नाउ कम्स ऑप्शन आप फर्दर, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, फर्दर इंफॉर्मेशन ये है कि इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू ओमिट द रिलेटिव प्रोनाउन एंड द वर्ब बी इन नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज बिफोर नाउन फ्रेज. सो फार हमने रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज के बारे में स्टडी किया कि आप उसमें से रिलेटिव प्रोनाउन को और वर्ब बी को कैसे ओमिट कर सकें. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप अपने नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो क्लॉजेज हैं उसमें से भी रिलेटिव प्रोनाउन को भी और वर्ब बी को ओमिट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर जैक्सन who is a professor is traveling in Mid East this year. So again आपको पास फर्स्ट इंडिकेशन कि ये आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है कि इसमें आपकी जो कंस्ट्रक्शन होती है राइटिंग की उसमें हमेशा कॉमा सेपरेशन होती है. सो दिस इज व्हाई वी हैव कॉमास है, बिकॉज इट्स अ नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज. आप इसमें से यहाँ पे जो who is है which is relative pronoun followed by a verb भी इसको ओमिट कर सकते हैं and yet the sentence makes sense, which is Mr. Jackson a professor is traveling in the Mid East this year. So that's how आपका sentence construction same रहेगी. इससे आपने relative pronoun और verb B को omit करना है. So in addition कि आप अपने restrictive relative clause को भी reduce कर सकते हैं, इसी तरीके से अपने non restrictive relative clause को भी reduce कर सकते हैं by omitting its relative pronoun and its verb B. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपका रिलेटिव क्लॉज की रिडक्शन को किस तरीके से आपने करनी है. सो आई होप इफ दिस ऑल मेक सेंस बाय नाउ. तो अब आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की फर्दर क्लैरिटी हो जाए. सो इट इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ 10 क्वेश्चंस. दिस इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस जिसके अंदर हमने आपको 10 क्वेश्चंस दिए हैं. आपने इनको रिड्यूस करना है. दे कैन बी रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज. आपने आइडेंटिफाई करना है रिलेटिव प्रोनाउन को और उसके वर्ब भी को और उसको ओमिट करना है. एंड जस्ट यू हैव टू रिड्यूस द सेंटेंस. सो इफ यू आर डन विद दीज 10 क्वेश्चंस वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द आंसर्स नाउ. Here we have answers. First question was George is the man who was chosen to represent the committee at the convention. So first ये है कि आपका relative restrictive clause है because we have no commas for writing. फिर आपके पास ये relative pronoun है which is who and this is the verb be. So how to reduce? The George is the man. आपने सिर्फ इन दो words को reduce किया है. Chosen to represent the committee at the convention. You just took out the relative pronoun who and the verb be was. Second question, all of the money that was accepted has already been released. ये भी एग्जाम्पल है आपकी relative restrictive clause की with no commas anything in writing. just आपको आपके बार बार रिमाइंड कराने के लिए कि आपको restrictive non restrictive को कैसे demarcate करना है, differentiate करना है. अब इसमें आपका relative pronoun that है which is followed by the verb be was. so आपने इन दोनों को remove करना है to reduce the sentence. now the sentence will be all of the money accepted has already been released. आपने इसमें से that was को remove किया है. Question 3, the papers that are on the table belong to Petrika. Again is an example of a relative restrictive clause. इसमें this is that is your relative pronoun and this is your verb be. So just remove these two things. The papers on the table belong to Petrika. The question 4, the man who was brought to the police station confessed to the crime. This is again example of a relative restrictive clause. आपने इसमें से who और was आपका मौजूद है which is relative pronoun and the verb be brought was. आपने इसको remove करना है. The man brought to the police station confessed to the crime. So that's how you reduce your sentence. Question 5, the girl who is drinking coffee is Mary Allen. Now this is your आपका continuous form है. This is relative pronoun and this is verb be. आपने continuous form से पहले भी इसको remove कर सकते हैं. So the girl drinking coffee is Mary Allen. You just reduce the word who is from the sentence. Question 6, John's wife who is a professor has written several papers on the subject. ये आपके पास non-restrictive relative clause की example है. इसमें आपने who is which is relative pronoun and the verb be इसको remove करना है. John's wife, a professor, has written several papers on the subject. बाकी आपकी sentence construction will be same. Question 7, the man who is talking to the policeman is my uncle. It's an example of a relative restrictive clause with no commas and everything. आपने इसमें से अपनी relative pronoun who और verb be को remove करना है. The man talking to the policeman is my uncle. Again the sentence makes sense. आपने simple इसको reduce कर दिया. Question 8, the book that is on the top shelf is the one that I need. Again this is an example of your relative restrictive clause. आपने इसमें से relative pronoun और verb भी को remove करना है. ये आपका prepositional phrase है on the top. So the book on the top shelf is the one that I need. So again आपके पास जो जितने आपको tags बताए थे कि आपके पास prepositional phrase से पहले omit कर सकते हैं, passive voice से पहले remove कर सकते हैं, continuous form से पहले remove कर सकते हैं. These are all these examples जिनको हम अभी तक practice कर रहे हैं.
Now question 9, the number of students who have been counted is quite high. अगेन आपके पास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव बीन काउंटेड, ये आपका पैसिव वॉइस पे फॉर्म है जिसमें आपने हु और हैव को रिमूव करना है, हैव बीन को, बिकॉज दीज आर आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और आपका वर्ब भी है. सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंटेड इज क्वाइट हाई. फाइनल एग्जाम्पल इज लियो इवंस हु इज़ अ डॉक्टर ईट्स इन दिस रेस्टोरेंट एवरी डे. ये आपकी एग्जाम्पल है रिलेटिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की, बिकॉज हम देख सकते हैं कि ये कॉमा से सेपरेट हुई हुई है. अगैन आपके पास जो हु इज़ है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका ये ऑक्सिलरी भी है. सो जस्ट रिमूव दीज टू. लियो इवंस अ डॉक्टर eats in this restaurant every day, and that's how you reduce your relative non-restrictive clauses and relative restrictive clauses. I know by now आप differentiate कर सकते हैं what is relative restrictive clause and non-restrictive clause, और उसको reduce कैसे करना है. ये आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव करेगा और आपकी स्पीकिंग भी हेल्प करेगा, ग्रामेटिकली भी. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस ऑल कॉन्सेप्ट, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक्स फॉर वॉचिंग.